Hi, good morning, everyone. Good morning, everyone. Let me quickly check the connectivity. Yes, fantastic. So, good morning, all of you. My name is Rachana, and I welcome you all to this YouTube live streaming. And this streaming, I believe, my dear CSEET aspirants, CSEET students के लिए ज़्यादा ये beneficial होने वाली है. This is the coverage of your Viva portion. That is part of your examinations, CSWT exams, CS Executive Entrance Test exams. So दोस्तों इस बार क्योंकि जुलाई में आपका वाइवा जो है वो मर्ज कर दिया गया है, अलग से वाइवा आपका नहीं होने वाला है, कंसीडरिंग द सिचुएशन आउटसाइड और जिस तरीके से करंट कंडीशंस बन रही हैं. इस बार आपको क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, सिलेबस में ही आपका मर्ज कर दिया गया है विद द नोटिफिकेशन. वी ऑल कैन अंडरस्टैंड दैट. लेकिन अदरवाइज द क्वेश्चंस आस्क्ड आर फेयरली सिंपल और आपसे जो है आपकी बेहतरी के लिए, आपकी बेहतर तैयारी के लिए ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. बेसिक कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन सब चीज़ों को असेस किया जाता है. सो वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस. इसके अलावा और जो है थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. सजेशंस हैव बीन गिवन टू ऑल ऑफ यू इन द फॉर्म ऑफ गाइडलाइंस बाय ICSI. काफ़ी सारे वहाँ पर रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं. सो वो सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. So the session will be especially useful to CS Executive Entrance Test Aspirants. I believe आप सब जो यहाँ आ गए हैं, जुड़ गए हैं. I will be reading your comments. Certainly यहाँ पर आपके जो लाइव आपके comments वगैरह, आपके input सारे वो मैं देखती जाऊँगी, यहाँ से आपको respond भी करती जाऊँगी. And those of you who will be watching the recording, I am available to you on Unacademy for any kind of questions that you have or anything that you would want to discuss. Other than this, you all can connect with me on LinkedIn. So, dosto, I told you my name. I shared my name with you, and I am a chartered accountant by profession. You all better know me as a coach and mentor. Been associated with Unacademy for a long time now, and yes, in the newly launched CS category, I'm teaching you business communication. बिजनेस कम्युनिकेशन का क्योंकि वाइवा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और अलग से इसको कहीं ना कहीं थ्रू द सिलेबस, व्हाइल कवरिंग द सिलेबस, इसको बहुत अच्छी तरह से कवर नहीं किया जा सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स डिस्कशन, इट रिक्वायर्स इनपुट, सजेशंस. सो आई थॉट इट इज़ अ गुड आइडिया टू डू इट ओवर अ सेपरेट सेशन. दोस्तों छोटी सी एक अनाउंसमेंट करते हैं आगे बढ़ने से पहले. विक्ट्री बैच आप सब जानते हैं, बैच अनाउंस हुआ था यहाँ पर अनअकैडमी पर 12 मई से, एंड देन द नेक्स्ट बैच हैज आल्सो कमिंग फ्रॉम 26 मई. अब यहाँ पर इस बैच के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन की आपकी क्लासेस दोस्तों जून में फिर से स्टार्ट हो रही हैं. जून में आपका जो है पूरा एंटायर बिजनेस कम्युनिकेशन वुड कमेंस ऑन जून 1. जुलाई में आपका जो है एग्जाम है, 10 जुलाई के आसपास आई बिलीव डेट आ चुकी है आपकी. 1 जून से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. मॉर्निंग 10:45 से आपकी होंगी करस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन की क्लासेस, कॉम्प्रहेंशन, करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन. इवनिंग इंग्लिश ग्रामर एंड बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो है ये आपका इवनिंग में रहेगा क्लास 5:15 पे शार्प. तो ये 2 बैचेस जो हैं ये चलेंगे थ्रू द मंथ ऑफ जून एंड यू विल बी ऑल सेट टू अपीयर इन द एग्जाम्स दैट आर टू बी हेल्ड इन जुलाई. ओके, तो आप ये नोट कर सकते हैं डेट यहाँ पर. और डिटेल्स के लिए आप अनअकैडमी पेज देख लीजिए, वहाँ पर शेड्यूल्स वगैरह जो है वो अपलोड किए गए हैं. अदरवाइज एक आध दिन में और जो है कर दिए जाएंगे. सो यू कैन join in. You can certainly join in. The batch is going on. Immense feedback from learners. बड़ा अच्छा feedback है, आप सभी join कर सकते हैं. In case still contemplating कि भाई अभी आपको एग्जाम्स होने वाले हैं, मुझे फटाफट जो है तैयारी चाहिए, मुझे एक ब्रशअप चाहिए. So you can think through. आप यहाँ पर स्पेशल क्लासेस वगैरह देख करके you can decide और आप अपना जो है एजुकेटर्स वगैरह आप देख लीजिए, तसल्ली कर लीजिए. Then you can consider this option. This is a good option is what I mean to say. चलिए अब आगे बातचीत करते हैं दोस्तों. आज का इम्पोर्टेंट मुद्दा जिस पर हमें चर्चा करनी है दैट इज योर बिजनेस कम्युनिकेशन प्लस वाइवा. तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है
वाइवा अगर आप देखें, ये मैंने एक्चुअली क्लास के लिए जो है स्लाइड बनाई थी कॉम्प्रिहेंशन, तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं। कम्युनिकेशन वाला पार्ट जो है हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से निपटा चुके हैं। कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल्स हम लोगों ने सब कवर कर लिया है। वाइवा आता है आपका इम्पॉर्टेंट पार्ट, वाइवा, राइट? सो दिस इज लाइक 30 marks dedicated to Viva and your all the presentation abilities, presentation skills, communication skills, presentation skills. 50 marks का तो आपका हो गया पेपर, है ना? 50 marks का पेपर, और उसके बाद आपका करंट अफेयर्स के साथ पेपर 4 करंट अफेयर्स प्लस योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वाइवा, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो ये 30 मार्क्स दोस्तों बहुत होते हैं। अब देखिए 30 मार्क्स का जो कवरेज है, टोटल 80 मार्क्स, इट्स अराउंड 40% ऑफ योर एंटायर जो पूरी मार्किंग है, पूरी मार्किंग स्कीम है उसका, राइट? तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, क्या आपका पॉसिबल अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पर दिक्कत क्या आती है ना, सबसे पहले समझिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम एरिया जो है वो कहाँ पर होता है। अभी तक until your plus 2, when you decided that you will appear for CSEET exams, you are a school student. हमारा जो दायरा होता है ना, वो होता है बहुत लिमिटेड। इंग्लिश अगर आप लोगों ने पढ़ी है, सो यू हैव स्टडीड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, नॉट एज अ लैंग्वेज। अब आप मुझे एक बात बताइए, बहुत सिंपल से एक बात बताइए, अगर आप सबसे यही वाइवा आपके मदर टंग में हो, अगर आप हिंदी स्पीकिंग है, मराठी स्पीकिंग है, बंगाली स्पीकिंग है, अगर आपसे ये पूरा जो क्वेश्चन आंसर राउंड है, जो भी ये डिस्कशंस हैं, अगर ये आपसे आपकी मदर टंग में हो, तो कैसा रहेगा? तो बढ़िया रहेगा ना। You will be a little more confident, right? You will feel little more comfortable to speak and to answer the questions, right? So this is the major problem. This is the part जहाँ पर self confidence first thing. Second thing is understanding of the language and then responding with confidence. है ना? Responding to the examiner with confidence. ये दो चीजें अगर आप अभी अपने इस लेवल पर डेवलप कर ले थोड़ी सी, तो आपके लिए ये पार्ट जो है 30 मार्क्स का स्कोर काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू आई डू दैट। तो दोस्तों आप में से बहुत सारे, जरूरी नहीं है सबका बैकग्राउंड एक जैसा हो, सभी इंग्लिश मीडियम से आए हों, सभी सेम सिमिलर बोर्ड से आए हों, सिमिलर तरीके का बैकग्राउंड, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आप सभी के लिए, सी वंस यू आर अ स्टूडेंट, वंस यू आर अ प्रोफेशनल एग्जाम एस्पिरेंट, तो सब मतलब एट पार आ जाते हैं। सबकी तैयारी जो है वहीं से शुरू होती है जहाँ से एक की शुरू हो रही है, राइट? सो अब जब यहाँ पर आप लोग जब बैच ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर जब मैं आप सबको जो है ट्रीट करती हूँ, पढ़ाती हूँ, तो कोशिश यही रहती है कि भाई हर एक के लेवल पे जाकर के पढ़ाया जाए, राइट? आज आपको भी यहाँ पर जो टिप्स देने वाली हूँ, जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आंसर्स, आई एम गिविंग यू दीज इनपुट्स एट द मोस्ट बेसिक लेवल। आपको इनको डेवलप करना होगा अपने अकॉर्डिंग, अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये आपका रहेगा, ये आपकी प्रैक्टिस वाली बात रहेगी। कैसे आपको अप्रोच करना है, ये मैं आपको अगले 50-55 मिनट में जो है बताने वाली हूँ, थर्डली आपको ये बताने वाली हूँ, ठीक? अब देखिए, ICSI ने आपको ये वाइवा इंस्ट्रक्शंस जो है ये इशू किए हैं। अगर आप CSET एग्जाम्स के बारे में देखते हैं ना, अगर आप CSET एग्जाम्स के बारे में सर्च करते हैं, आप अपना ICSI का पेज देखते हैं, आपको ये इंस्ट्रक्शंस जो है ये मिलेंगे। 4 बार आपका एग्जाम ये होता है ना? आपका जनवरी, मई, जुलाई एंड नवंबर, ये 4 बार आपका साल भर में एग्जाम्स होता है। एवरी टाइम देयर इज अ सिमिलर पैटर्न फॉलो, एंड देन यहाँ से वाइवा इंस्ट्रक्शंस जो हैं दे रीड like this. Suggestions are that you read any English daily, that you read any daily English newspaper. Like what? Like Times of India, Economic Times, Business Standard, Statesman, any Telegraph, आपको कोई भी जो भी लोकल डेली आपको मिलता हो। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको बाई चांस प्रॉब्लम है, अभी इस समय लॉकडाउन के चलते आपको नहीं मिल पा रहे हैं न्यूज़पेपर वगैरह, अगर इवन इफ यू कैन फाइंड बिजनेस मैगजीन्स, एनी मैगजीन, आउटलुक, आपको अगर ऑनलाइन भी अगर आप एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसको भी आप रीड करें तो भी ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको, सी पेपर रीड करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर योर पर्सनैलिटी ऑल्सो, ठीक है? देयर इज समथिंग कॉल्ड अ मोबाइल फोन पोस्टर, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ न्यूज़पेपर पोस्टर। अब मैं आपको बताती हूँ पोस्टर से रिलेटेड बातें। पोस्चर क्या होता है बॉडी में? हाउ यू कीप योर स्पाइन, हाउ यू ले डाउन, हाउ यू ले योर बॉडी, राइट? तो आपका बेसिकली स्पाइन से रिलेटेड होता है।
स्पाइन आपका अपना कितना इरेक्ट रखते हैं, आप अपना जो शोल्डर्स हैं उनको कितना स्ट्रेच और आप कितने चौड़े अपने शोल्डर्स रखते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग आप अपीयर होते हैं, राइट, कितना आपका पोस्चर जो है वो इरेक्ट स्ट्रेट अपीयर होता है। हाउ डू यू लाइक अ पर्सन, अगर कोई आपके सामने जो ऐसे लुंज पुंज बिल्कुल ऐसे ढीला लटका हुआ हो, एंड somebody who has a well built well groomed personality, जिनके की shoulders stretched out है, जो कि सीधे खड़े होते हैं, गर्दन जो है उनकी सीधी रहती है, और we prefer people, the people with better posture, they come across as more smart, more presentable. अब ये बात क्यों हो रही है यहाँ पर दोस्तों, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, एनीथिंग है ना, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं, सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, आपका न्यूज़पेपर के साथ में जब आप एनीथिंग, व्हेन यू ओपन लाइक दिस, योर पोस्चर इज ब्रॉडेड, योर शोल्डर्स आर स्ट्रेच्ड आउट, ठीक है। आप इस तरीके से जब पढ़ते हैं तो आप बुक खोलते हैं, न्यूज़पेपर खोलते हैं, सी ओपन इट अप लाइक दिस, है ना, यू हैव टू स्ट्रेच योर शोल्डर्स, इट प्रोवाइड्स यू अ बेटर पोस्चर, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना मतलब इट्स अ ग्रेट रिकमेंडेशन, और स्टूडेंट्स के लिए सजेस्टेड भी है, रिकमेंडेड है कि आप 5 से 10 मिनट जरूर पढ़ें। वहीं अगर आप मोबाइल फोन पर रीड करते हैं ना, मोबाइल फोन आपका छोटा होने की वजह से व्हाट हैपेंस इज, ऐसे वी जनरली टेंड टू डू लाइक दिस, हम ऐसे करके जो है यहाँ पर हमारे शोल्डर्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, और जनरली आईज जो है वो एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं स्क्रीन पे, सो दिस इज हैजार्डस, है ना। ये जो हैबिट होती है मोबाइल फोन से एडिक्शन, मोबाइल फोन पे बहुत ज्यादा टाइम क्लॉकिंग, दिस इज हैजार्डस बोथ फॉर योर आईज एज वेल एज योर बॉडी, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन भी होती है इससे, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम फोन पर क्लॉक करेंगे इससे आपको एंग्जाइटी भी हो जाती है, ठीक है। मेडिकल रीजन है इसके, लॉट ऑफ रेडिएशंस, रेज एटसेट्रा, और कई बार जो है इससे आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपके आईज में इचिंग, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें भी शुरू हो जाती है। कोई भी लोकल डेली न्यूज़पेपर मिलता है, अगर हो सके तो उसको आप जो है हॉकर से आप कहिए उसको लगा लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, जितना हम अपना रिचार्ज वगैरह करते हैं उससे बहुत ही कम, मतलब उससे कहना चाहिए 1/4 चार्जेस में यू कैन अवेल अ डेली न्यूज़पेपर। हो सके तो कोई भी मैगजीन, वीकली कोई मैगजीन या डेली न्यूज़पेपर आप अपने लिए अरेंज कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको बताती हूँ न्यूज़पेपर वगैरह से रिलेटेड जो है, आपको ना यू शुड रीड न्यूज़पेपर अलाउड, 5 to 7 minutes, read it aloud. आपको लगता है भाई बाहर लोग देखेंगे, मजाक उड़ाएंगे, घर पे मैं किस तरीके से इसको मैनेज करूंगा, अरेंज करूंगा या करूंगी, तो आप अपना एक कॉर्नर ले लीजिए, जो भी स्पेस आपको अलॉटेड है, भाई घर में आपका रूम है, आपका स्टडी टेबल है, वहां पर बैठ के जोर जोर से रीड कीजिए, एटलीस्ट 5 to 7 minutes. यू डोंट नीड टू रीड द एंटायर थिंग, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी कॉलम पसंद आता है ना, वो जो भी कॉलम, टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे देयर आर मल्टीपल कॉलम्स, है ना, स्पीकिंग ट्री होता है, बहुत सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड कॉलम्स आते हैं, फाइनेंस कॉलम्स आते हैं, तो बड़े सारे अच्छे अच्छे कॉलम्स होते हैं। जनरली आपका मैगजीन्स भी होती हैं इन न्यूज़पेपर्स में, सो दोज आल्सो यू कैन पिक अप एंड रीड। इकोनॉमिक टाइम्स में एवरी वेडनेसडे there is a magazine. Times of India, every Wednesday, Saturday, there is a magazine. So it could be related to various affairs. It could be related to economics. It could be related to job market. It could be related to generally Hollywood, Bollywood news. But अगर आप read करना शुरू करते हैं ना, you start developing confidence with your speech, which is the most important part. Clarity needs to be maintained. My dear friends, at all levels, whatever you speak should be clear and audible. है ना? जैसे जब लिखते हैं तो मैंने आपको क्या बताया, लिखते हैं तो क्या एसेंशियल होता है, लेजिबिलिटी, लेजिबिलिटी, इट शुड बी रीडेबल, वॉट एवर यू प्रेजेंट इट शुड बी रीडेबल, राइट, while writing. So now while speaking also, whatever you present must be understandable, must be intelligible. आप जब कोई भी चीज आप बोलते हैं, it should be clear, it should be nice to ears, easily audible, easily understandable. तो ये करनी है आपको प्रैक्टिस, एंड दिस डेवलप्स विद प्रैक्टिस। रोज जब आप 5 से 7 मिनट पढ़ेंगे, you will come across several words that you're reading for the first time. That happens with all of us. Whenever we start, this happens with all of us. And you will come across words जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपको आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी काम आएगा। भाई नए synonyms, antonyms, ये सब आपके सिलेबस में है। You can mark the words, you can find out the meanings, you can check the antonyms, क्या मतलब होता है, usage क्या होता है। So this not only enhances your vocabulary but also gives you a clarity as to how you can use this word. ठीक है, तो इस तरीके से डेवलप होती चली जाती है आपकी वोकैबुलरी, नॉट दैट आपको
लगातार पता चलेगा ऐसा नहीं है. Results are not always visible, but yes, the results become tangible over a period of time. ठीक है ना, over a period जब आप बातचीत करना शुरू करेंगे, when your horizon also expands, when you start interacting with others in a group, your own classmates, your batchmates, through the Viva when you will interact with the examiners, तब आपको realize होता है how developed you are when you look back and you understand that that was the level where I started and now here I stand with much better enhanced vocabulary and better speech. ये एक बहुत अच्छा आइडिया है आपको फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए एंड ऑल्सो योर रीडिंग स्पीड. आपको कॉम्प्रहेंशन वगैरह जो करना होता है ना एग्जाम में उसके लिए भी आपकी तैयारी यहाँ से होनी शुरू हो जाती है, आपकी कॉम्प्रहेंशन स्पीड बढ़ जाती है, आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ जाती है. ठीक है, सो ये पॉइंट है, इसको सीरियसली कंसीडर कीजिएगा. ठीक, अब क्या होता है ना, वाइवा इंस्ट्रक्शंस तो रीड कर लिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़े, अब लग रहा है कि हाँ अरे ये तो लिख दिया है, ये तो क्या है, ये न्यूज़पेपर रीड करना है और ये रोज रोज रीड करना है. बट दिस इज गॉट अ ह्यूज इम्पैक्ट. पता है आपको, जब मैं ट्रेन करती हूँ ना, मैंने ऑफर वर्कशॉप्स, मैंने ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल्स को, सीनियर फोक्स हु come who reach me to develop their skill set, to develop their spoken abilities, their writing abilities, उनके साथ भी ये बेसिक एक्सरसाइजेस हम लोग परफॉर्म करते हैं. These exercises are offered to them also. तो अगर आप अभी स्टार्ट कर देते हैं ना at this level, at entry level, it will be immensely beneficial to you. बहुत आपके काम आने वाली ये वाली चीज़. ठीक. Now next important point is how to speak confidently. How to notice your confidence when you speak. For this, practice in front of a mirror is a great idea, my dear friends. Great idea. आप जब भी, जैसे आप इसके लिए सिंपल सी बात है, कोई एक स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हो. आप सबने स्टोरीज पढ़ी है, ढेर सारी स्टोरीज पढ़ी है. अब आप सब मोस्टली +2 स्टूडेंट्स हैं. कोई भी सिंपल सिंपल स्टोरी बुक्स ले लीजिए, मिडिल स्कूल की स्टोरी बुक्स ले लीजिए, जो भी आपने पढ़ी हो, जो भी आप पसंद करते हो. ठीक है, गो थ्रू दीज शॉर्ट स्टोरीज. ये शॉर्ट स्टोरीज वगैरह तो आप लोग इतनी शॉपिंग करते हैं, कहीं ना कहीं अमेजन से कहीं कुछ लेते हैं, कहीं कुछ लेते हैं. सिर्फ ना हो तो एक आप ऑर्डर कर सकते हैं, छोटी सी 15-20 स्टोरीज की कोई बुक आप ऑर्डर कर लीजिए. स्टोरी भले छोटी सी हो, भले वो चूहे बिल्ली वाली स्टोरी और हाथी और चींटी वाली स्टोरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना. स्टोरी शुड बी इन इंग्लिश. एंड आफ्टर यू हैव रेड इट, आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी, try and stand in front of a mirror narrating the same story to yourself. अगर कोई सिबलिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज get started narrating the story to yourself standing in front of a mirror. पहले एक बार, 2 बार, 3 बार, हो सकता है आपको दिक्कत हो सकता है आपको डिक्शन, चॉइस ऑफ वर्ड्स एक्सप्लेन करना अपने आप है ना. एक चीज होती है रीडिंग करना, एक चीज होता है whatever you have read, you have grasped it well and now you want to narrate it. Right now you want to narrate it to somebody. तो इसकी होती है, मतलब इसके लिए जरूरी होता है आपका डिक्शन अच्छा, इसके लिए जरूरी होता है आपकी वोकैबुलरी जो है वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड हो, थोड़ी सी एडवांस हो. राइट, सो यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. व्हाट हैपेंस विद मोस्ट स्टूडेंट्स इज that the case is not that you do not know the answers. क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपको आंसर्स आते नहीं हैं या फिर you are not aware of the facts, you do not know the surroundings. No, this is not the case. What happens is usually you are short of words to express yourselves. होता है ना, सबके साथ होता है. बताओ, कई बार ऐसा होता है कि भाई इंग्लिश में बोलना था and I was short of words. I knew the answers but I could not explain well. I could not articulate my answers. होता है ना ऐसा, mostly यही होता है. For more than 90% students, this is the case that they are unable to express themselves well. Not that they don't know the answers, they know the answers well. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी चाहिए. आप कोई भी एक नरेशन से स्टार्ट कीजिए. नाउ लर्न टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ आल्सो फॉर अबाउट 2 to 3 minutes, है ना. अब लंबा लंबा इंट्रोडक्शन जो है 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं. Even if you can speak about yourself for 2 to 3 minutes, this is more than good. आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन आप अपना फ्रेम कर सकते हैं वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ. दिस विल हेल्प यू थ्रू आउट. एनीबडी आस्क्स यू, सो can you tell us something more about yourself? This is the most common question asked during the interviews also. ये जो है ना, tell us about yourself, ये most common question है during the interviews. आपने शायद सुना होगा, कुछ और कोई पूछे या ना पूछे, the most common question, most frequently asked question is, so tell us something about yourself. इसकी प्रिपरेशन थोड़ी थोड़ी आपको अभी से करती रहनी चाहिए. कैसे आप कर सकते हैं, I'll tell you, I'll give you the notes. ठीक है, अब इसके बाद फॉलो सम इंग्लिश चैनल्स. दोस्तों पॉडकास्ट हैं, चैनल्स हैं, डिस्कवरी वगैरह है.
आप अगर कोई मूवी वगैरह देखना पसंद करते हैं, डिवोट सम टाइम टू वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, एनी डॉक्यूमेंट्रीज। आप लोगों ने वो प्लानिटेरियम वगैरह पे शो देखे हैं जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, है ना? हैव यू नोटिस द clarity in the speech? You know, that is the best thing to be appreciated in those documentaries, the clarity, the accent. वो कितना भी accentuated हो, वो understandable होता है. The way they say things is much more soothing to your ears than a regular movie or any, you know, opera that you watch over Netflix or any other series. तो अगर आपको एक्चुअली इम्प्रूव करना है ना, अगर आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, देखो, देयर इज no limit to what you can do after you have attained a qualification. You may be working, all of you may be aspiring to work with multinational companies, with big four corporations, organizations. अब यहाँ पर people come from several parts of the globe, है ना? यहाँ पर जब क्रॉस बॉर्डर्स होता है ना, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, तब हर किसी की अलग अलग एक्सेप्ट होगी. आपको समझना है उसको, आपको रिस्पॉन्ड भी करना है. सो रिस्पॉन्ड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपका एक्सेंट भी सेम हो, ठीक है? वी कैन हैव आवर ओन इंडियनाइज्ड वर्जन ऑफ, यू नो, स्पीकिंग, एंड इंडियन एक्सेंट इज आल्सो अ ग्रेट एक्सेंट बिकॉज इट इज वेरी क्रिस्प, इट इज वेरी क्लियर. बट yes, to be able to understand is very important. And these things also you will develop, these parts of the non-verbal communication, understanding the accent, the paralanguage part, all this you will develop as you get involved in devoting some time to watching these channels, you know, listening to the podcasts, and also devoting some time to reading subtitles. देखो, टाइम पास जो वाली बात होती है ना, हम सब करते हैं. आपके लेवल पे हम लोग 24 घंटे तो पढ़ाई करते नहीं है, या भाई 12-15 घंटे. ये तो तब पॉसिबल होता है कि जब एग्जाम्स बिल्कुल पास आ गए, तो हाँ, आप में शायद 7-8 घंटे 9 घंटे जो मुझे क्लॉक करने हैं, ठीक है? इसके अलावा जब रेगुलरली आप जब ये शोज वगैरह देखते हैं ना, सीरीज देखते हैं, हर कोई देख रहा है आजकल. बाहर जाने पे पाबंदी है, अंदर घूमने पे पाबंदी है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर, है ना? लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट वी ऑल आर ट्राइंग टू डू. तो उसी में ना इसको आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए. इसी को मतलब रूटीन में इसको इन्वॉल्व कर लीजिए कि भाई 15 मिनट 10 मिनट मुझे न्यूज़पेपर पे डिवोट करना है, 5-7 मिनट आई विल नरेट अ स्टोरी और आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ, है ना? अल्टरनेट डेज कर लीजिए चाहे तो. किसी दिन मैं पॉडकास्ट सुनूंगा, किसी दिन मैं कोई गेम शो देख लूंगा. मैं जब छोटी थी और मिडिल स्कूल में रही होंगी 7th-8th में, सो उसमें नया नया ये केबल टीवी वगैरह ये सब स्टार्ट हुआ था, सैटेलाइट चैनल्स एंड ऑल. सो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग, इमिटेटिंग द न्यूज रीडर्स. ये जब CNN वगैरह BBC आता था, मुझे इनके न्यूज रीडर्स बहुत अच्छे लगते थे. सो आई यूज्ड टू इमिटेट देम, taking a newspaper in hand and taking a storybook in hand. So I never thought that you know, this simple idea will help me so much for future. So dosto, nothing goes waste. Any effort, you know, any kind of hard work that you put in to develop yourself never goes waste. ये ध्यान रखना, हर जगह काम आएगा आपको. अभी हम वाइवा की बात कर रहे हैं ना, सिंपल हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट योर CSEET वाइवा. ये आपको आगे इंटरव्यूज लेने देने तक, आपके टीम मेंबर से कम्युनिकेट करने तक, हर जगह काम आएगा. टू फाइंड अ प्लेस इन द इंडस्ट्री एज अ फाइन प्रोफेशनल, एज अ फाइन लीडर, आपको हर जगह कम्युनिकेशन स्किल्स जो है अगर आपकी बेहतर होंगी तो आपको हेल्प करेगी, ठीक है? इसके बाद दोस्तों आपको अपने सीक्वेंस करने हैं थॉट्स और उसको क्विकली प्रेजेंट करना सीखना है. सो दिस विल हैपन ओनली थ्रू इफेक्टिव वोकैबुलरी. When you have an advanced vocabulary, when you have a little group over your ideas, when you know how to articulate your answers, when you know exactly how to say and what to say, तब ये चीजें आप जो है ना, quickly being able to say quickly, being able to answer quickly, to be able to understand the question thoroughly. कई बार ऐसा होता है ना, we have to say, sir, can you please repeat? Sorry sir, I could not understand the question. Why that happens is due to anxiety sometimes, or due to our I would not say undeveloped, ये कहना चाहिए underdeveloped vocabulary. आपकी जो vocabulary है, you are yet to develop it to a level where you can be part of any communication, any correspondence with ease. ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, ये हमको अभी डिस्कस करनी है. आपको टिप्स तो मैंने दी, जनरल टिप्स. अब इनके कुछ खास क्वेश्चंस हैं कि भाई जिस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो हैं आपके लेवल पे, जैसे एंट्री लेवल पे ना, इनके बहुत जनरल आंसर्स चाहिए. इनके कोई स्पेसिफिक आंसर्स नहीं चाहिए कि भाई आपको ये आंसर्स जो हैं ये कोई टेक्निकल आंसर्स आपको देने हैं. एंड एट एंट्री लेवल यू आर एक्सपेक्टेड टू हैव ऑल द टेक्निकल नॉलेज दैट परहैप्स यू वुड बी स्टडीइंग लेटर देन नाउ ऑनवर्ड्स फॉर 3 years 4 years ऑफ टाइम.
तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपसे जस्ट क्योंकि आपने एक ऐसा कोर्स चुना है, दैट इज एन इंक्लूसिव कोर्स जिसमें कि बहुत कुछ आपका रोल जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक रोल होने वाला है, आपका सिलेबस जो है वो वास्ट होने वाला है, इसलिए एक आइडिया लिया जाता है भाई वेदर यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट और नॉट, है ना। तो ये जो मॉक क्वेश्चन सब बड़े जनरल लेवल पे पूछे जाते हैं, एंड इफ यू आर सिचुएशनली अवेयर, इफ यू आर सेल्फ अवेयर, अगर आपको थोड़ा बहुत भी आपने करंट अफेयर्स वगैरह प्रिपेयर किया, अगर आप न्यूज चैनल्स वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, you will be able to answer these questions with ease, ठीक है, इजीली आप आंसर कर सकते हो। इन सब के आंसर्स मैंने जस्ट एक फ्रेमवर्क बनाया, आंसर्स का ना एक स्केच बनाया, मैं आप सबको दिखाती हूँ, एंड यू ऑल शुड गो बैक तो चलो अभी तो घर वापस जाना नहीं है, आप घर पे ही बैठे हुए, गो बैक मतलब आफ्टर दिस सेशन, आफ्टर द डिस्कशन इज ओवर, टेक योर नोटबुक्स, टेक योर पेन पेंसिल्स, राइटिंग टूल्स लीजिए अपने, और इनके ना अपने आंसर्स बनाइएगा सजेशंस पर बेस्ड, अपने आंसर्स बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, देन यू ऑल कैन कम बैक टू मी, दोस ऑफ यू वाचिंग कैन यू जस्ट पुट इन अ कमेंट, आपको समझ में आ रही है बात, जो मैं आपको भी आउटलाइन दे रही हूँ ना यहाँ पे, उस पर बेस आप अपने आंसर्स बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड देन यू ऑल कैन रीच बैक टू मी ओवर द क्लासेस। कल से आपकी क्लासेस वगैरह सब रेगुलरली चलेंगी, या फिर ऑन अनअकैडमी मैसेजिंग, और इफ यू आर कनेक्टेड विद मी ओवर लिंक्डइन, और यू कैन राइट मी एन ईमेल एज वेल। जरूर मुझे बताना कि आपको आप बेटर कॉन्फिडेंट लग रहा है कि नहीं। नहीं है, ये सिर्फ एक अटेम्प्ट की बात नहीं है, ये आपके लिए परमानेंट, आपके लिए जो है ये एक रूल और ये फ्रेमवर्क, एक ग्राउंडवर्क आपको ये तैयार करके देने वाला है, जो मैंने आपके यहाँ पर आपके लिए जो है ये आउटलाइंस बनाए हैं, ठीक। So let's see these questions. Why do you want to become? Why do you want to join company secretary course? What is the current state of Indian economy? And in a very general manner, you're not supposed to be answering like an economist, wherein they have numbers, they have GDP, growth rates, etc. No, not expected. ठीक है? General overview कि आपको क्या लग रहा है भाई, जॉब मार्केट से रिलेटेड, इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड, है ना, जीडीपी का जनरल व्यू अगर जो है, what is happening to the economy. And with all this vaccination, etc., with this second wave, how has been the hit, the sectors most hit, the sectors that have gained, यही बातें, थोड़ी छोटी बातें, ठीक है। Tell us about yourself. What are the goals of your life? What are your strengths and weaknesses? Can you briefly explain the role of a company secretary? These two big important questions. Why do you want to join the course? And what is the role of a company secretary? Whether you are at all aware about who's a company secretary, what a company secretary does. तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन, जैसे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स? सो फॉर मी अ सिंपल आंसर वुड बी, अगर एक स्टूडेंट जैसे कि +2 स्टूडेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं सोच करके देखूं, तो भाई CS जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर्स आफ्टर +2 में अगर कॉमर्स स्टूडेंट से पूछो कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, रेज ऑफ हैंड्स, कितने कंपनी सेक्रेटरीज बनना चाहते हैं, मतलब ये आपका CA, CS एंड CWA, CMA नाउ, दीज आर द मोस्ट सॉट आफ्टर करियर्स, है ना, फॉर +2 जो कॉमर्स स्टूडेंट्स होते हैं, है कि नहीं बताओ? मोस्ट ऑफ देम रिमेनिंग वुड वांट टू डू एन MBA, सम कुछ ग्रेजुएशन करना चाहेंगे और आगे कुछ जो PCS एग्जाम्स वगैरह देना चाहेंगे, है ना। इस तरीके से सबके एस्पिरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स but CS is certainly one of the most sought after careers. Now, what you can add is, I have deep interest in business and I understand that a company secretary is at a strategic position, है ना, it's नहीं होना चाहिए यहाँ पर, is होना चाहिए, is at a strategic position in the organization, ठीक। Company secretary is directly in charge of all the company affairs. He is involved or she is involved directly in compliance, business laws, regulations, governance and other related affairs. So imagining myself in the role of a CS, that gives me a great high. मुझे बहुत अच्छा लगता है because I am so much interested. I have deep interest in business and my family background is that of business or whatever you may want to add. तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है भाई, कंपनी सेक्रेटरी इज इन सच अ रोल, ही परफॉर्म्स और शी परफॉर्म्स सच फंक्शंस, एंड दैट इज व्हाई इमेजिनिंग माई सेल्फ एज वन, दैट गिव्स मी अ ग्रेट बूस्ट एंड अ कॉन्फिडेंस, इट इंस्पायर्स मी टू बिकम वन, राइट? So I want to reach the professional heights through this career. This is why I want to join the company secretary course. I think being a company secretary or becoming a company secretary can give a huge boost
to my aspirations and ambitions. Is this answer good? It is a good answer. It is a crisp answer at your level, at entry level, wherein students are aspiring to become a professional. है ना? Why they want to join that course? तो ये क्लैरिटी होती है कि भाई मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या क्या काम होता है, बट येस आई नो कि उसकी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन होती है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उनका बड़ा बोलबाला होता है ना, जिसको कहते हैं भोकाल होता है ना, बहुत सारे वो फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं, कंपनी अफेयर्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, कंप्लायंस, गवर्नेंस, रेगुलेटरी, हर चीज़ में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है. तो जब मैं अपने आप को इमेजिन करती हूँ या करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे लगता है कि भाई मैं भी ये सारी चीज़ें करूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफ़ी मैं इंक्लाइंड हूँ बिजनेस की तरफ टू टेक अप द अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा, है ना. आप अगर कुछ केस लॉज वगैरह पढ़ते रहते हैं तो आपको एक दो केसेस पढ़ने चाहिए, रूल्स वगैरह थोड़ा सा और पढ़ करके आपको देखना चाहिए. ठीक है, दिस इज गुड. So why do you want to join company secretary course? You can have similar answers. देखो, this is just a template for you. This is maybe a sample answer. ठीक है, ये मैंने अपने हिसाब से सोच करके रखा है. आप इसको बेस बना करके अपना कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. Whatever your thoughts are, you may add those thoughts here. आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इसको बेस रखते हुए आप ऐड कर सकते हैं. Your answer could be somewhere close to 45 seconds to 1 minute. And a 1 minute long answer. Let the answer not be longer than 1.5 minutes. Maximum length of the answer should be 1 to 1.5 minutes. या आप बोल करके देखेंगे ना स्टॉप क्लॉक में, तो आप काउंट कर सकते हैं, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. See, when you speak anything 2-3 times, you develop more confidence speaking the same thing again. ठीक है, तभी प्रैक्टिस की जाती है. होता है ना ऐसा, आप देखो जैसे क्लास, अगर टीचर आपको क्लास में पूछे, या मैं ही कभी क्लास में पूछती हूँ कुछ इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस कि भाई कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, सो मे बी वी हैव लेसर रेज ऑफ हैंड्स. नहीं आता, किसी को नहीं आता, एवरीबॉडी इज लुकिंग एट ईच अदर कि ये आंसर करेगा, ये आंसर करेगा, कौन टॉपर आंसर करने वाला है. हाँ, बट व्हाट हैपेंस इज, if towards the end of the period I say that okay, I'm going to be asking the same question to all of you again tomorrow, and you must come prepared. So next day when I ask the same question, most of you will raise hands. Right or wrong? बताओ मेरे को ये. आप सब मैक्सिमम लोग जो है हाथ उठाएंगे because you were prepared this time. You were prepared this time. This time you knew the question. ठीक? So this is what we are trying to do here. We are trying to sketch the answers, sample answers, on which you can frame, you can build your answers. You can build your personalized answers, your customized answers. ठीक है? अब देखिए next question. But what is the current state of India economy? Now this is a question which is expected to be answered by you in a very general manner. ठीक? Very general manner. अब general manner में भी ये जो इकोनॉमी का आइडिया होता है ना, दिस इज वास्ट, दिस इज रियली वास्ट. इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी. सो नाउ what I will talk here is, I will not talk about the numbers, GDP, growth, etc. What I would say is, जैसे ही at this moment, when we are talking about July results or July exams, at this moment, just as the Indian economy was beginning to show some signs of recovery, by last year disaster के बाद, first wave के बाद, just as we were seeing some signs of recovery, the second wave completely washed away all the positive signs, right? March, April was a bad hit, and we all know that all the gains that we noticed early this year, later last year, have all been completely washed off. Anna? The second wave of pandemic struck India around in February, March, and still continues to disrupt the entire economy. We all know this. The priority has become tackling health issues. And a health crisis has destabilized everything. Country's medical infrastructure, citizens are scrambling helplessly for oxygen, hospital beds. So all this, all the other economic activities have been set aside, and this has become a priority. And other economic activities have also experienced the terrible hit. We can see the impact in the prices of petrol, diesel, etc. ठीक है? ये तो आप सब जानते हैं. ये तो general views है ना? ये तो general news है. ये सब आप लोग जानते हो, है ना? Vegetable prices, oil prices, everything. These all things have been taking rounds in the news. तो ये आपको थोड़ा सा बोलने आना है. बोल आप इस तरीके से सकते हो. Idea should be clear कि आप क्या क्या include कर सकते हो.
ठीक है. Central government refrained from announcing a national lockdown, right? Considering the hit that we had experienced last year and we are still recovering, right? Economic risks have been mounting and the state level restrictions and partial lockdown. So while center did not announce a complete lockdown, states had to take a decision depending on their own internal conditions, right? So restrictions, curfews, partial lockdowns, etc has hit several sectors. Several sectors have borne the hit like travel, tourism, hospitality, retail, etc. ठीक है, there was a massive hit. While some sectors have gained, banking, insurance वगैरह, NBFCs की बात करें, edtech sector की बात करें, ये सब ने gain किया है. As for the Center for Monitoring Indian Economy, so you all must know this name. ये नाम ना आपको पता होना चाहिए. We have a Center for Monitoring Indian Economy, CMIE. Unemployment also rose significantly in April 21 due to disruption of the business activities. See, this is giving you some important points that you can cover. Whatever I'm saying at the moment, whatever I'm speaking, is giving you important points that you can cover whenever asked anything about state of Indian economy, the current state of Indian economy. समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है ना? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो अभी ऐसा भी बोल सकते हैं कि भाई जीएसटी जो है कलेक्शंस इन्होंने जो है सिग्निफिकेंट राइज दिखा है, कुछ एक सिल्वर लाइनिंग से दिखी है. There was a rise of approximately 16% in GST collection. Got huge by a lot of chartered accountants, a lot of people talking about huge GST collections. Now the thing is, अभी जो collections है ना, अप्रैल collections जो हैं, ये पिछले सेल्स के हो सकते हैं, मार्च के, पिछले मंथ्स के, जबकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा था. So they may not be the real picture. Real impact may not be captured. I mean, these numbers may not be real. These may be the inflated numbers. ये हो सकता है realistic ना हो. GST collections जो हैं, normally as a practice, conventionally, GST collections they show the pickup, they show the results at the end of the financial year as the companies they close their books, etc. ठीक है? So yes, export performance has also been encouraging in April, underpinned by strong global growth, but agar pandemic still rolls over, so we may see a ripple effect kind of a thing. So the priorities remains vaccination, mass vaccinations. We can at the moment understand that not even 2% of the entire population is completely vaccinated. Completely vaccination में 2% का भी नहीं है ना. For most of us are mourning the deaths of our near ones, loved ones. इसके अलावा हर जगह availability भी नहीं थी पहले, वो 45 plus years वालों को जो है provide किया गया. So now a lot depends on how quickly can we roll out the vaccinations. So priority is the health sector. सबसे पहले health crisis and the management is the priority, and all the other business activities and economic activities have certainly experienced the hit. Okay, there are certain booming sectors that have gained through this crisis, and a major sector that has experienced the hit. Got the answer? Answer मिला यहाँ से? Answer मिला? So all these things you can talk about. You can perhaps note down the major points for at least next 3 to 4 months. These points can certainly form part of your answers. ठीक है? ये सब जो है ये fact based है. देखो ये सब ना statistics based होता है. So if you go through the news, if you listen to the news, you go through the newspapers, you are fond of checking some kind of statistics, etc. You like to flip over the good web pages, जो ये इस तरीके के news channels वाले जो pages होते हैं ना, आपको CNBC और ये बहुत सारे ABP वगैरह है, जो news channels होते हैं basically. आज तक में भी आता है, India Today, Outlook वगैरह में भी आता है, Entrepreneur में भी आता है, बहुत सारे अच्छे जो magazines और अच्छे जो newspapers हैं, उनके pages अगर आप go through करते हो, you will get good content, and you can certainly structure your answer well. You can structure your answer. Important part would be speak with confidence and use the statistics that you are sure of. Don't ever give inaccurate numbers. ठीक है? अगर if you're not sure of the answers, don't use those statistics. Don't use inaccurate number. ठीक है? Always whenever speaking, accuracy will enhance your confidence. When you know the facts, when you know there is some accuracy to it, authenticity to it, you automatically become more confident speaking. ठीक है? ये clear है? You want an answer? You got a good answer? At least you know the framework now. ठीक है? चलिए.
Next, tell us about yourself. The most interesting part of any Viva, any discussion, any kind of exchange of thoughts or ideas. Tell us something about yourself, right? So I'm so and so. I'm Rachana, and I hail from Steel City, Bhilai. I belong to a close-knit family of 4 people. When my parents were government officials, I have a brother who's also pursuing an engineering course or maybe an MBA or whatever. If you at all want to mention, okay? This is a little in few seconds about my personal background, about my personal stuff. Where I come from. I come from a joint family or a close-knit family, nuclear family, right? I'm a plus 2 student from school. Must mention your institution, wherever you are graduating from or wherever you're pursuing your studies from, your plus 2 आप जहाँ से भी अपना करें अपना school का नाम जो है ना XY senior secondary school से to 10, so whatever that was my name of my school, तो आप जो है अपना नाम school का जरूर दे सकते हैं. I aspire to become an eminent businessman, entrepreneur, expert, anything. And I'm greatly inspired by, you can give some names, maybe Sir Ratan Tata, Azim Premji, any name, right? Indira Nooyi, whatever, whoever you want to name. ठीक, तो आपको अपना एस्पिरेशन देना चाहिए, आपको अपना इंस्पिरेशन भी यहाँ पर ऐड करना चाहिए. दैट शोज कि भाई आप जो है एक गोल रखते हैं लाइफ में. ठीक है, यू आर अ यंग स्टूडेंट हु हैज aspirations, the one who's inspired by many eminent people or personalities. ठीक है, now I have deep interest, or you can write keen interest in. So for example, ask me, I have keen interest in numbers. I have keen interest in research. ठीक है, इसके अलावा you can write you have keen interest in accountancy. You can write that you have keen interest in anything else. Any other kind of businesses. You know what are the domains and the new businesses. आप क्या क्या करना चाहते हैं, आपका जैसे आप कंप्लायंस बोले, आप बोले आई हैव कीन इंटरेस्ट इन रिपोर्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एंड आप इस तरीके से जो भी बेसिक जो फंक्शंस हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह अगर आपने स्टडी किया है, इकोनॉमिक्स अगर आपने स्टडी किया है, अकाउंटेंसी आपने स्टडी किया है, सो आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट्स या डोमेन्स जो है वो लिख सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट. ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको कुछ आंसर्स देने पड़ेंगे, नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी जनरल. आपसे किसी किस्म के कोई टेक्निकल इनपुट्स की उम्मीद यहाँ पर नहीं है. एग्जामिनर्स हैं वो भी जानते हैं कि भाई आप प्लस 2 स्टूडेंट हैं, आपसे यहाँ पर जनरल आपका जो है जनरल एक आइडिया एंड अप्रोच नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय द एग्जामिनर एंड दैट्स ऑल. ठीक है, in next few years I plan, so by certainly tell us about yourself. That at the moment this is considered to be a busy period for a student, the plus 2 period, है ना. So you want to take up a few professional exams, or in next few years, you want to plan. I plan to develop myself. You plan to develop yourself through academic studies. This is a fact, right? आपको यहाँ पर academic studies वगैरह के through आप अपने आप को develop करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं. ठीक, ट्रेनिंग एंड अदर स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज. सो आपकी इंटर्नशिप्स हो सकती है, आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह हो सकती हैं. Other activities, you have taken up certain courses, other courses, and you are getting involved more and more to develop yourself through studies. What are these academic studies, training programs, skill development activities? यही तो है जो courses है. Perhaps you happen to join, you clear your CSEET exams and you join CS. ठीक है, this is a course through which certainly you will gain academic knowledge. आपकी training भी होगी, practical training, तो भाई वहाँ से through training you gain certain skills and you develop yourself as a professional. ठीक है ना, तो ये चीज़ जो है ये एकदम क्लियर हो जाती है. आपका प्लान क्लियर हो जाता है, आपका आइडिया क्लियर हो जाता है अबाउट लाइफ, अबाउट योरसेल्फ. सी टेल अस अबाउट योरसेल्फ. इट्स नॉट अबाउट योर पर्सनल लाइफ हिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट कंप्लीटली अबाउट योर पर्सनल लाइफ. पूरा का पूरा आपसे आपका पर्सनल हिस्ट्री नहीं पूछ रहा है कोई भी. ठीक है, पर्सनल जो है आप थोड़ा सा बता सकते हैं. इट इज गुड टू टेल योर पर्सनल स्टफ, थोड़ा सा. ठीक है, 20 सेकेंड्स तक आप बता सकते हैं. इसके बाद ट्राई टू नाउ ट्रांजिशन टू what you want to do in life, what you aspire to become, how you aspire to become. Other than this, you can add some hobbies and some achievements as well. This is a standard sketch even during the interviews after you have become a professional. So after you have completed your CS, after you have become a company secretary, also you can use this sketch. ठीक है, other than this, I am a great cook, or maybe I have keen interest in cooking, or maybe playing badminton. I'm a state level swimmer, right? I am an avid reader.
I am a good orator, and then have some supportings. Recently in the school level competitions, I won my school these prizes, right? The best orator prize or the best speaker, I won the elocution competition, right? On the spot, some other competition. I have interest in reading, so I have read. I am an avid reader, so I read these kind of books, and then be ready for some simple answers. ठीक है? आप चाहे जो भी बोलो, आप कोई भी ऑथर का नाम हो, कोई भी आप बुक्स का नाम लेते हो, you should have some little bit of understanding of the material inside the book. Just बोलने के लिए नहीं बोलना चाहिए कभी भी. वाइवा में ना, what is most important is your genuineness, your genuine approach. ठीक है? तो सच में अगर रीडिंग में इंटरेस्ट है ना, then what do you read? So what do you read? You should know fiction, non-fiction क्या पढ़ते हो आप, ठीक है? एक दो ऑथर्स के आपको नाम पता होना चाहिए जिनका मटेरियल आपने पढ़ा है. So you are aware of their style, you are aware of the content of that book. ऐसे फंडे नहीं मारने, ठीक है ना? Be truthful, be genuine. So in case there is one or simple question asked, आप बता सको, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको जरूर मेंशन करना चाहिए. This shows the overall पर्सनालिटी ऑफ योर्स कि भाई आप सिर्फ एक आप नर्ड नहीं है, आप बिल्कुल एक बुक फॉर्म नहीं है. यू हैव अ पर्सनालिटी बियॉन्ड बुक्स एंड बियॉन्ड एकेडमिक्स ऑल्सो. ठीक है? ये आंसर 30 seconds, 40 seconds, again 20-30 seconds, after 2 minutes, 2 minutes, 2.5 minutes maximum. ठीक है? अपने और एक दो अचीवमेंट जो है आप शेयर कर सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस आप शेयर कर सकते हैं. ठीक? This is clear? You will make your own answers based on this. इस स्केच के साथ ना अपना आंसर बनाना और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करके देखना, बोल करके देखना. You will feel much more confident to answer next time. इसमें अभी क्या होता है पता है? Tell us about yourself. I am so and so. My name is so and so. है ना? Myself से भी start करते लोग. Myself this. Never say myself this. Myself is a reflexive pronoun. Myself से start नहीं करते कभी भी. कोई भी sentence जो है doesn't begin with myself. है ना? I am so and so. I am CA Rachana Khare Ma'am. I hail from Steel City, Bhilai. Right? My name is Rachana. I am a chartered accountant by profession. I hail from Steel City, Bhilai. Right? तो आपको I am. My name is. इससे आपको शुरू करना चाहिए. Got it? इसके बाद देखिए next question जो है, this is your goal setting. दोस्तों ये सब ना transferable skills कहलाते हैं. Excuse me. गोल सेटिंग एबिलिटीज आपके लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. भाई व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ? आप कोई पूछे स्टूडेंट्स को लगे यार ये कैसा बेतुका सवाल है ना, आए थे वाइवा के लिए क्या पूछ रहे, व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ? एट द मोमेंट मेरा गोल है कि मेरा सीएसईटी एग्जाम क्लियर हो जाए. आप मेरे को 30 मार्क्स में से जो है 30 दे दो, एटलीस्ट 25 प्लस तो आप मुझे दे ही दो. ठीक है? सो हियर यू शुड नो कि मल्टीपल देखो गोल्स जो होते हैं, ये गोल सेटिंग बेसिकली दिस इज अ स्किल, दिस इज अ ट्रांसफरेबल स्किल. To be able to identify your goals, to be able to clearly list down your goals, divide them into short term and long term goals. तो multiple होते हैं दोस्तों. short term goals हो सकते हैं, long term goals हो सकते हैं. विजन आपका विजन, आपके ड्रीम्स, आपका मिशन, ये सब चीजें यहाँ पर सोच कर देखना आपने क्या क्या सोचा अपनी लाइफ के लिए. अब आप सब मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी 17-18 years of age, तो आपने कुछ तो सोचा होगा आगे. एस्पिरेशंस होते हैं भाई अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, नए नए दोस्त, कोई आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो आपको चिल्स होते हैं कि अरे वाह कल मैं ऐसा करूंगा. अभी आप सीएस एग्जाम्स दे रहे हैं, सो यू ऑफन विजुअलाइज एंड इमेजिन योरसेल्व्स एज अ कॉर्पोरेट वर्कर. आप जो है अपना कहीं पर कॉर्पोरेट लीडर, मैनेजर, उसके रूप में आप अपने आप को देखते हैं, अपनी सक्सेस को आप विजुअलाइज करते हैं, फॉर्मल्स में खुद को देखते हैं और आपको खुशी होती है. होता है ना? सबके साथ होता है दोस्तों. हाउ वेल आर यू एबल टू आर्टिकुलेट दिस? ठीक है? दिस इज द आइडिया हियर. शॉर्ट टर्म related to career, by next few years में 2-3 years में you want to complete your graduation and also your CS studies, you would be interning somewhere, है ना, related to studies. By quickly you want to finish all your exams etc, then training, qualifications, and long term goals can be to become a leader in the industry, your vision, how you plan to contribute to everyone around you or your country, your environment, your surroundings. What do you think inspires you the most? What do you think is your calling at the moment? आपको कैसा लगता है? मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि भाई आपको जो है अभी के अभी बताना है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई ना. ये तो बड़े बड़े प्रोफेशनल्स, people who are in their later 40s and 50s are still searching, still trying to find the purpose of their lives कि भाई मेरा calling क्या है, मेरा vision mission क्या है. But yes, in case you have a thought,
Do think on these lines. What I'm suggesting to you is to think on these lines. जैसे आप किस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी को. सम स्टूडेंट्स दे ट्राई टू वर्क फॉर ओल्ड एज ऑर्गेनाइजेशंस. आजकल तो सब कुछ वर्चुअली भी पॉसिबल है. आप कोई भी एनजीओ के साथ ऑनलाइन भी एसोसिएट कर सकते हैं. आपने कहीं पर कोई पार्ट टाइम काम किया है, यू केयर अबाउट सम कॉज लाइक वुमेन एम्पावरमेंट, यू केयर अबाउट child welfare cause as a social cause. What are the social causes you care about? What are those some of the initiatives etc where you have contributed? अभी कोविड के लिए इतना कुछ हो रहा था, फंड रेजिंग हो रही थी. So by did you associate with any NGO or did you contribute in any way? You help somebody. आपको अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है, कोई भी लॉन्ग टर्म आप अपना थोड़ा सा ना, अगर आप अपने लीडरशिप और विजन के बारे में बात कर सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा. दैट विल एक्चुअली शो एन आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड पर्सनैलिटी कि भाई मेरे को क्लियर है, मैं बच्चा हूँ तो क्या हुआ, आई एम 17-18 years, आई एम स्टैंडिंग एट द एंट्री लेवल, बट येस आई नो दैट दिस इज माय शॉर्ट टर्म करियर. आई वांट टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी थ्रू दिस करियर. आई वांट टू मेक अ प्लेस इन द इंडस्ट्री एंड लॉन्ग टर्म येस आई वांट टू डेवलप एज अ लीडर. है ना, आई वांट टू स्पेशलाइज इन दिस XYZ डोमेन. एनी जो भी आपको लगता हो कि आपको करना चाहिए, ठीक है. These are the social causes I care about and this is how I plan to contribute to the society. ठीक है, that shows your overall personality. Causes you care and plan to contribute for. ये सारी चीजें अगर आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लेना, 5-6 लाइन का भी आंसर बना ले अराउंड 1 minute, it will be good enough. ठीक है, it will be great. Okay. Now next. What are your strengths and weaknesses? Frequently asked questions, not only in your Viva, but also in the interviews. अब इसमें दोस्तों क्या है? This is a tricky question. What are your strengths and weaknesses? So now, हाँ, you start crying about your weakness कि मैं तो सोता ही रहता हूँ सर, मेरे को नींद बहुत आती है, ये मेरी weakness है, मैं खाता बहुत हूँ, है ना? Through the lockdown, I've become very fat or I've become very lean. I get very anxious. So all these things are not really your weaknesses, है ना? All this is space. This is part of growth. ठीक है? ये obvious physical weakness share नहीं करनी कभी भी. ठीक है, never share an obvious physical weakness. No, don't do that. ठीक है, share something that can also be known as a strength, something that can also be considered as a strength. Just like what? जैसे कि आप compassionate हैं, है ना? You empathize with others. ठीक है, you are flexible. You try and help others as much as you can. Sometimes due to anxieties, you're so engrossed in studies that you forget to eat or perhaps sleep on time, right? Maybe that you are a little careless, you're going a little careless due to the studies and persistent anxiety, you're going a little careless about your health. Your commitments are very important to you, okay? Because of your goals in your mind, you are unable to focus on other priorities. तो ये सब आपके जो हैं हो सकते हैं कुछ ना कुछ weakness, and this is a strength too. ठीक है, ओवर कंपैशनेट होना, ओवर कंसिडरेट होना, जहाँ पर क्या हो सकता है अगर आप ओवर कंसिडरेट होकर आप सबकी बात मान जाते हो, क्या बोलते हैं ऐसे को, जो somebody who trusts everyone, they call it credulous, है ना? So in case you're credulous, you trust everyone, you can be मतलब जिसको कौन लोग कहते हैं ऐसे जिनको इजीली शीशे में उतारा जा सकता है, somebody who are who trust everyone with ease, and it is easy to make them trust, right, oneself. तो ये क्या कहलाते हैं? Credulous. So such personalities often have to bear the cost also. जैसे आपको अगर आपके हर एक फ्रेंड को लगता है कि भाई आप इजीली ट्रस्ट कर सकते हो, people may take advantage of you. ठीक है, people may take advantage of you. This happens most of the time. So being over flexible, भाई आप अगर over flexible हैं, हर किसी की बात मान लेते हैं, हर कहीं adjustment करने को आप तैयार हो जाते हैं, that also can be considered as a weakness. While these can be great strengths also at work, there is a depth of people who are compassionate, who are considerate. Often जो managers होते हैं उनके लिए क्या आता है term? खड़ूस, कि कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ता, कोई वो बात ही नहीं सुनते, कोई emotions ही नहीं. So these qualities are sort of the qualities in leaders, in prospective managers, but at the same time, excess of anything is bad, right? Excess of anything is bad. तो इसलिए excess नहीं होना चाहिए. You can express that I am trying to curb the excessive trait that I have. I have an excess, so I'm trying to take a control over that.
ठीक है. And I think that these things are immense strengths as well. These things can be converted to strengths at the moment. I realize that this is my weakness. I'm over compassionate for others, or maybe I'm over considerate. Sometimes I go careless about my own health and my family, etc. I devote too much time to perhaps others or maybe other important things. आप कुछ और मैं अपने काफी anxious हो जाता हूँ पढ़ाई वगैरह को लेकर के. But that is somewhere my commitment. Right? That is somewhere my commitment to my goals, and I'm trying to take a good hold and control, and I'm trying to balance these. Okay? I'm trying to convert my weakness into a strength. That shows your personality. That shows your optimism. Optimism is very important. दोस्तों आप एक चीज जानते हो ना, ये जो कोर्सेज हैं, CA है, CS है, CMA है, इसमें ये अटेम्प्ट्स वगैरह बहुत नॉर्मल बात होती है ना. अटेम्प्ट्स लगना, अटेम्प्ट्स लग गए, अभी एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, उसके बाद जी धड़कने लगता है, धड़ palpitations. Oh my God, I'm taking so much attempts. My friends are well placed. They are doing so well. So दोस्तों, optimism is the only quality that will sail you through. Have patience. Be optimistic. Develop the ability to see through. Try to develop self confidence, जिसके थ्रू आप पुल आउट कर पाओगे. देखो कई बार क्या होता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं that are the differentiators. कि भाई आपने बहुत अच्छी तैयारी की, एग्जाम में जो है आप उसको रिकॉल नहीं कर पा रहे, रिट्रीव नहीं कर पा रहे. सडनली कोई ऐसी इमरजेंसी, कोई ऐसी कंडीशन आपके घर में अराइज हो गई. अभी हुआ, इतने लोगों के साथ हुआ है, इतना पेनफुल सिचुएशन है, बट स्टूडेंट्स वुड बी राइटिंग द एग्जाम्स, है ना. कई लोगों को अब मतलब दे लॉस्ट देयर फैमिली मेंबर्स टू कोविड, कई लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, बिजनेस लॉसेस हुए हैं, बट स्टूडेंट्स दे कांट एस्केप द एग्जाम्स. क्या लगता है ये सारी चीजें क्या उनके दिमाग में नहीं कर रही होंगी? So all these are also the important factors to be considered. लेकिन जिंदगी जो है बहुत बड़ी है इन सब चीजों से. Life goes on, ठीक है, and life must go on, है ना. तो ये optimism जो है, ये क्वालिटी है जो कभी भी compromise नहीं करना चाहिए, ठीक है. This is why while answering this question, strengths and weaknesses, कभी भी अपनी obvious weakness आपको बोलने की जरूरत नहीं है. ओके, आप एक ऐसा कुछ ट्रेट लीजिए, ऐसी कोई क्वालिटी जो कि आप स्ट्रेंथ की तरह भी दिखा सकते हैं. ठीक, इसको प्रिपेयर करना है ना. इस आंसर को भी आप अपना प्रिपेयर करेंगे. ठीक, इसमें 1 मिनट लायक आंसर आप 7 to 8 लाइंस आप प्रिपेयर करेंगे. नाउ कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. तो ये तो मैंने आप लोगों को क्लासेस में भी समझाया है. तो दोस्त ऑफ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस, भाई क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी. कंपनी सेक्रेटरी कहना चाहिए एक स्ट्रेटेजिक रोल पर होने वाले एक ऑफिसर होता है, राइट. कंपनी सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द एंटायर अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ अ कंपनी. An officer placed at a strategic role, at a key position. ठीक है. How they efficient administration of a company. What does a company secretary handle? They do handle the efficient administration of a company. ठीक है. Smooth affairs, right? Statutory compliance, all the kinds of statutory compliance books, regulatory books, etc. are maintained by company secretary. He is the officer responsible. He is the officer in charge. Any kind of regulatory matters, they fall in the kitty of the company secretary. The company secretary's job is also to arrange for all the board meetings, AGMs, etc., EGMs, etc., writing the minutes, statutory meeting के मतलब all the kind of regulatory जितने भी meetings वगैरह होते हैं, उनके सारे के सारे documents maintain करना, books maintain करना, ये company secretary का काम होता है. Any point of time, a person, an officer who knows the most about the company, most intrinsic affairs, micro affairs of a company, is a company secretary. ठीक है, ऐसा कंपनी सेक्रेटरी. तो कंपनी के बारे में माइक्रो डिटेल्स भी जो होते हैं ना, कहाँ क्या लूपहोल्स है, कहाँ क्या गैप्स हैं, कहाँ पे वी आर डूइंग गुड, दिस इज ऑल नोन टू अ कंपनी सेक्रेटरी द बेस्ट. ठीक है, किसी को इतना नहीं पता होता जितना कि कंपनी सेक्रेटरी को पता होता है. ठीक है. अपडेटिंग चेंजेस इन एनी प्रोविजंस, भाई हमारे लिए काम के प्रोविजंस हैं, कुछ ओमिट करना है, नया ऐड करना है, सब इनका काम होता है. ये मीटिंग्स का मैंने आपको बता दिया. मीटिंग्स तो आप लोगों ने देख भी लिया ना ऑलरेडी. नोटिस वगैरह जब लिखते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स लिखते हैं, नीचे किसका सिग्नेचर होता है? कंपनी सेक्रेटरी का. ठीक है. मेंटेनिंग ऑल द काइंड ऑफ पेपर वर्क एंड स्टैट्यूटरी बुक्स इज ऑल, दिस इज ऑल ब्रॉडली, दिस इज द रोल ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, एवरीथिंग. So an officer placed at a strategic and a key position in the organization. ठीक है.
देन अरे ये तो हो गया दोस्तों, यही था, अरे यही क्वेश्चंस थे, आई थॉट कि चलो यही मेन क्वेश्चंस थे. ब्रॉडली दीज वर द क्वेश्चंस दैट वर offered, that were designed, that were given, suggested by ICSI to prepare. I think इनके इनसे रिलेटेड भी हो सकते हैं क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन भी रोल पूछा गया, आपको इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, करंट अफेयर्स से रिलेटेड. तो ये आई थिंक दीज 6 क्वेश्चंस आर मोर देन गुड टू प्रिपेयर, मोर देन सफिशिएंट आल्सो. अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं ना, सो आई थिंक आप ब्रीफ आंसर्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में दे सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में. कोर्स के बारे में आपने बात कर ली है ना, आपने अपना जो है स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात कर ली, बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए. About yourself we have also talked, goals of your life, these are broad. अगर इसमें से कोई पार्ट भी कोई पूछ लेता है ना, तो भी आप जवाब दे पाएंगे, बशर्ते आप प्रिपरेशन अपनी करते रहे. ठीक है, थोड़ा थोड़ा बोल करके रोज एक दो आंसर बोल के कॉन्फिडेंटली यू विल be able to speak. After you have practiced once, twice, thrice, fourth time you'll be able to speak better. You'll be able to speak without reference. You'll be able to speak more confidently. ठीक है, तो ये करते रहना है. ठीक है, और अपनी लिसनिंग एबिलिटीज, अपनी लिसनिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए गाइस डू रिसोर्ट टू 1 or 2 पॉडकास्ट्स. अच्छे खासे कोई बिजनेस चैनल्स के पॉडकास्ट लोगे ना, दे आर बेटर. उसमें जो है बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएटेड नहीं होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी रहेगी. डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, उससे भी लिसनिंग स्किल्स आपकी एनहांस होगी. ठीक है, क्लियर? सो आई होप दिस वाज अ यूजफुल session, useful class to all of you. And 1st of June, my dear friends, we are commencing the brand new batch of your business communication, and your skills presentation, etc. also will be covered there. And both the things, your English grammar section, your English grammar, language and business terminology section, the remaining part of business communication, that is comprehension, communication as well as correspondence, entire thing will be covered over these next 30 days. Timings will be morning and evening both. आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. क्लासेस starts 1st of June. So you can look at the Unacademy pages for more details. Schedules will be updated. I think आज Sunday है, so कल early morning तक update हो जाना चाहिए. You all can check it there. Take care. God bless you all. In case you want to join in, you want to buy the subscriptions, you may use this referral code KHR10 and you may avail some discounts as well. Take care and see you soon. Bye-bye.